Hello and welcome to the channel. So, in this judiciary series, now we are discussing the Constitution of India. So, earlier video we have already discussed Article 19, freedom of speech and expression, and all the freedoms which are mentioned in there. So, this is the PYQ videos of Article 19. So, I hope you are getting benefits from these videos. So, I have already explained the concept. So, now in this video, we will go through the PYQ. So, let's start the video. तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी हैं पीवाईक्यूज की तो आपको पैटर्न पता होगा। तो हम स्लाइड लगाते हैं, उसके बाद 5 सेकंड का टाइम होता है, आप उसको पॉज करके अपना आंसर देने की कोशिश कीजिए चारों क्वेश्चन की। और उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड आएगी आंसर की, जिसमें हम आंसर्स बताएंगे भी, थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो करेंगे, वरना एक्सप्लेन हम करते नहीं है क्योंकि एक्सप्लेनेटरी वीडियो में ऑलरेडी सारी चीजें एक्सप्लेन है। सो विद दिस वी विल मूव ऑन। So the first question is, which article of our constitution provides the right to freedom of speech and expression to the citizens of India? And the answer is B. बहुत simple question है, and it is repeated also. Second question, fundamental freedoms given under Article 19 of the Constitution are available only to citizens of India. ये हम discuss कर चुके हैं explanatory video में. Next question, six freedom under Article 19 of the Constitution are sacrosanct and inalienable. Yes. Absolute without any restriction. No. Subject to reasonable restriction. Yes. So the answer is A and C. The number of categories of freedom guaranteed by Article 19 is, and now it is 6. Earlier it was 7. Right to property was also there. It is changed, amended through 44th Amendment 1978. So I hope आपने चारों क्वेश्चन के सही आंसर दिए होंगे. तो we will move on to the next questions. Okay, so the answers are available. The question is, which fundamental right is available to citizens only? Right to equality is not. Right against arrest and detention is available to both citizens and non-citizens. Protection of life and personal liberty is available to citizens and both non-citizens. And C, freedom of speech and expression is available only to citizens. Next question. In which of the following case the five judges bench, constitutional bench, observed that doctrine of postponement was aimed at balancing the right of an accused to be presumed innocent till completion of final trial within the media rights to freedom of expression? B. The answer is B. Sahara India Real Estate Corporation and ORS versus Securities एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो डॉक्ट्राइन ऑफ पोस्टपोर्टमेंट क्या कहती है, यहाँ पर सामने लिखी हुई है कि दैट एन अक्यूज इज प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट अंटिल ही इज गिल्टी। ठीक है, सेम शुड बी देयर इन द मीडिया when you are expressing something, you are writing something, it should be like written. If you are writing something against accused, so it should be a balanced approach should be there. So this is held in Sahara India Real Estate Corporation case. Next question, which of the following is not explicitly mentioned in Article 19 of Indian Constitution? तो ये हम पढ़ चुके हैं explanatory video में, that is freedom of press. It is not expressly mentioned, बाकी ये तीनों expressly mentioned हैं. So with this we will move on and see next questions. Okay, so the question is, an answer is available. So the question is, the Supreme Court has held that right to fly the national flag with respect and dignity is a fundamental right of every citizen within the Article 19(1) Clause A of the Constitution of India, and it is held in which case? एंड द आंसर इज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल। तो ये केस हम पढ़ चुके हैं, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। In Amir Sahani versus Commissioner of Police AIR 2020, the Supreme Court laid down, and the answer is A. Public spaces cannot be occupied indefinitely for expressing dissent. शाहीन वक वाला केस है ये हम पढ़ चुके हैं अपना, तो आई होप ये आपको याद होगा और आपने आंसर सही टिक किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a fundamental right guaranteed under Article 19 of the Constitution of India? And the answer is D. freedom of self determination। बाकी ये तीनों हैं उसमें, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच जजमेंट did the Supreme Court of India uphold that freedom of speech and expression through medium of internet enjoys constitutional protection under Article 19(1)(a? And the answer is अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कश्मीर में जो इंटरनेट बंद किया गया था, ये उससे रिलेटेड केस है, बात को फंडामेंटल राइट बना दिया गया, राइट टू यूज फ्रीडम ऑफ इंटरनेट को। तो ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं एक्सप्लेनेटरी वीडियो में, तो नाउ वी विल मूव ऑन।
Okay, now so the answers are available. The question is, which of the following cases is not related with Article 19(1)(a) of the Constitution? प्रकाश झा इंटरनेशनल है, सेक्रेटरी आईबी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भरत कुमार है, केथरी रेनिंग वर्सेस स्टेट ऑफ सौराष्ट्र इज नॉट देयर। तो आंसर इज डी। बाकी तीनों केसेस हमने डिस्कस कर रखे हैं एक्सप्लेनेटरी वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following articles of the Constitution of India is related to the liberty of press? And बहुत simple question है आर्टिकल 19। which one out of the following is not a fundamental right? Right to strike, right to call a band is not a fundamental right. We have already discussed this in our previous video, that is the explanatory video of freedom, right to freedom. Uh, Next question, in which of the following cases it was held that provisions of chapter 8 of CRPC being in public interest are not violative of Article 19 of the Constitution of India? And the answer is Madhu Limay versus SDM Mungipur। तो ये केस इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ये हमारी एक्सप्लेनेटरी वीडियो में नहीं था, तो इट हैज बीन कवर्ड इन PYQs। So with this we will move on. Okay, though the famous श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में भी है ना। तो इस केस का मेन मतलब क्या था कि जो सेक्शन 66A है और IT एक्ट का, वो इट इज एंटायरली वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 19(1)(a) नॉट बीइंग सेव्ड बाय द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था। ये रिलेटेड किससे है कि कहीं भी आप अपनी मर्जी से जो इंटरनेट बंद कर देती है सरकार, है ना, चीजों को कर्व डाउन कर देती है, तो ऐसा सरकार नहीं कर सकती है। बहुत ही ज्यादा रीजनेबल होनी चाहिए। जब हम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस गो थ्रू कर रहे थे तो हमने समझा था कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के कुछ टेस्ट हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का एक टेस्ट है, जिसमें आप उतनी ही कर्व कर सकते हैं जितनी जरूरत है ना, क्योंकि आपको मैक्सिमम फ्रीडम देनी है, मिनिमम उसको रेस्ट्रिक्ट करना है जहां बिल्कुल ही जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आप आपातकालीन टाइम के लिए किसी चीज को बंद कर देंगे या किसी फ्रीडम को कर्ब कर देंगे। तो ये इस केस में यही हेल्ड हुआ था, एंड वेरी इंपॉर्टेंट केस, आर्टिकल सेक्शन 66A से रिलेटेड है। तो ये वहां पर नहीं था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, तो हमने यहाँ पर थोड़ा समझ लिया इसको। वी विल मूव ऑन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड, नॉट, क्वेश्चन को संभाल के पढ़ना है हमें। नॉट इज देयर, which of the following is not a ground on which a reasonable restriction on the right of speech and expression can be imposed? And the answer is D, public policy। public policy नहीं है, security of the state, public order और morality है, जो कि हमने पढ़ा था, लेकिन public policy is not there। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द अंडर मेंशन राइट इज गारंटेड टू सिटीजंस एज राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19? एंड द आंसर इज डी, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन इज नॉट दियर, राइट टू वोट इज नॉट दियर, राइट टू सिटीजनशिप इज नॉट दियर, है ना। तो डी इज देयर। तो विद दिस वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। Okay, so the question is, being a juristic person, a company is not a citizen. ये तो clear है. But in which of the following cases the Supreme Court held that if the state action impairs the right of the company, thereby affecting the rights of the shareholder, the protection of Article 19 will be available? And the answer is RC Cooper versus Union of India। ये हम डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके हैं केस, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, नोट डाउन कर लीजिए। Which of the following is a fundamental right? Right to assemble with arms is not a fundamental right. Right to form cooperative, yeah. Right to employment is not a fundamental right. Right of religious denomination to own immovable property only for charitable purpose, it is also not a fundamental right, because right to property is not there. It's a constitutional right, not a fundamental right. So the answer is B. Which of the Constitution of India, article of the Constitution of India guarantees citizens the right to settle in any part of India? And the answer is it's a constitutional right, C। पूछा गया क्वेश्चन है 2011 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स, एंड द आंसर इज राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग। राइट टू स्ट्राइक इज नॉट देयर, राइट टू लॉकआउट इज नॉट देयर, बट राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग is there, which is covered under article 19 clause 3। So now we will take the next set of questions। Okay, so the question is, right of a citizen to carry on any occupation, trade or business is D, right to assemble peacefully without arms। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, नथिंग टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेनेटरी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं।
The state can make any law imposing reasonable restrictions on the right of the citizens to form association, and the answer is A, in the interest of sovereignty and integrity of India, which is there, we have discussed. Article 19(1)(e) of the Constitution of India guarantees D, that is freedom to reside in any part of India. अब आपको ये आर्टिकल 19(1)(a), B, C, D, E और G ये सारे सीक्वेंस में भी याद होने चाहिए, क्योंकि ऐसे सीक्वेंस पूछ लेते हैं तो आपको एकदम से पता होना चाहिए कि वो कैसा है ना। तो उसका कोई न्यूमोनिक बना लेना, ताकि वो याद करने में, थोड़ा सा समझने में, रिमेंबर करने में आसानी हो जाए। बाकी रिवीजन इज द की, तो ये तो मैं पहले से ही कहता आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1997 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 इंसर्टेड अंडर आर्टिकल 19(1)(c). तो उसने क्या ऐड किया था? कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐड किया था, तो ये तो हमने पढ़ रखा है। सो मूव ऑन। So the answers are here. Pursuant to a constitutional amendment, cooperative society find a place among fundamental rights, and the answer is Article 19(1)(c). है ना, तो ये डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा रिमेंबर करने वाली चीज है, तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राउंड ऑन विच the state can impose reasonable restrictions on the right to move freely throughout the territory of India, and the answer is D, protecting the interest of any scheduled tribe। तो बहुत ही सिंपल है, और हम डिस्कस भी कर चुके हैं एक्सप्लेनेटरी वीडियो में। अ फॉरेन सिटीजन रिजाइडिंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम फंडामेंटल राइट टू, फॉरेन सिटीजन किस चीज को क्लेम नहीं कर सकता? फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, बिकॉज इट कम्स अंडर आर्टिकल 19, एंड आर्टिकल 19 इज देयर ओनली फॉर द सिटीजंस ऑफ इंडिया। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया इज इम्प्लाइड इन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, क्योंकि एक्सप्रेशन की फ्रीडम में ही फ्रीडम ऑफ प्रेस आती है, तो आंसर इज सी। रिपीट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। सो नाउ वी विल मूव ऑन। Okay, there is a question of match the list, freedom of assembly is there, profession, speech association, तो ये सारे आपको मैच करने हैं, रटने वाला क्वेश्चन है, आंसर इज ए, है ना। थर्ड, तो तीसरा इसमें मैच हो रहा है, तो ये आपको देख लेना है। What is imperative to show the requisite respect to the national anthem, and the answer is B, stand respectfully। uh, ये हमारा केस भी है जो वाद विटनेस वाला, जिसमें हमने पढ़ा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ हेल्ड किया है, तो द आंसर इज बी। थर्ड क्वेश्चन इज राइट टू इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल पार्ट ऑफ आर्टिकल, एंड the answer is A, article 19(1)(a). Right to information is covered under article 19(1)(a) of the Indian Constitution. So with this we will take the next set of questions. Okay, so the answers are here, and the question is, which of the following freedom is removed from Article 19 as freedom, fundamental freedom? So the answer is D, freedom to acquire and hold property. It's now a constitutional right under Article 300A, where you can have property, but it's not a fundamental right. ठीक है, next question. And the amendment in which it is done is 44th Amendment 1978, तो ये याद रखने वाली चीज है। Which constitutional right is not a fundamental right? Repeat question है, बहुत बार पूछा गया, and right to property is there, Article 19(1)(f), है ना। Within the Indian legal system there is no right to property। सही है, it's not true। Right to property is a fundamental right? No, no, not, it's a constitutional right, so the answer is C। uh, it is used, next question is, it is used to be a fundamental right but now it is a legal right, वो सेम क्वेश्चन है, राइट टू प्रॉपर्टी। सो ज्यादा कुछ समझाने वाला नहीं है। आई होप ये अभी तक आपको याद हो गया होगा राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड। सो नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। Okay, so this is the last set of questions and with answers, and the question is, right to property ceased to be a fundamental right, and the answer is 1978, 44th Amendment discussed earlier. Restrictions upon freedom of speech and expression can be imposed under which article, and the answer is 19 clause 2। सबके अपने अपने आर्टिकल हैं, सामने लिखे हैं, तो एक्सप्लेनेटरी वीडियो में तो आप उसको जाके देख सकते हैं।
Who can impose reasonable restrictions on the fundamental rights? And the answer is B, Parliament, because it is the power of the Parliament to make law or to make the amendment and to add reasonable restrictions under the freedom of right to freedom. Okay. Last one is hacking test under Article 19 Clause 2 is related to, and the answer is decency and morality. This is Eklund test we have discussed and I have explained it earlier, so we are not going to discuss this. So with this video comes to an end, and I hope you are liking this series. आपको फायदा मिल रहा होगा. एक्सप्लेनेटरी पार्ट में हम ऑलमोस्ट सारी चीजें एक्सप्लेन कर देते हैं, जो भी केसेस होते हैं, जो भी चीजें होती हैं, और एक एक पॉइंट जो कि केस हो या फिर कोई फैक्ट हो या फिर कोई चीज हो जो भी एक्सप्लेनेटरी वीडियो में होती है वो आपको दिखता है कि PYQs में पूछी गई है, तो हम कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं पड़ते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टाइम, है ना. So with this, if you are getting benefits, so please like this video, subscribe the channel, hit the bell icon, and do not forget to share all these videos with your friends and friend circle so that you can get the benefits of this video. With this being said, we will meet in the next video.